Hello everyone. So let me continue with the remaining questions. Now we are starting with our next normal distribution question, that is 2017 May. In a sample of 120 workers in a factory, the mean and standard deviation of wages are this and this respectively. Find the percentage of workers getting wages between this and this in whole factory, assuming that wages are normally distributed. Okay, you are provided with areas as well. Okay, so let me start. Let me just take the important points from the book. Okay, so in the first part we have, let me write down the year 2017 May. So we are given with number, that is n, that is 120. We are given with mean, that is 11.35. We are given with standard deviation, that is 3.03. Okay, let me draw the diagram, this one. Okay, so now what the question is saying, first of all, for normal variate, they asked for 9 and 17. So let me calculate for 9 first. So what we have to do, we have to take the value of x equals to 9 first, that is my x1, and in case of x2, we have to take the value 17. So I'm taking the value, I'm calculating z1, that is x1 minus mean upon standard deviation. So my answer is, what is my x1? That is 9, 11.35 upon 3.03, right? Once I'll calculate, I'll get the answer minus 0.7755, or we can also write down it as minus 0.78. Okay, that's your choice, but 0.78 would be better. Now in the second part, I'm calculating z2. So my formula is x2 minus mean upon standard deviation. So z2 equals to 17 minus 11.35 upon 3.03. So my answer would be z2 equals to 1.86. Okay, so I have two values. The first one is this one and second one is this one. So I'm putting these values here. 1.86 is my z2 and minus 0.78 is my z1. So I have to find out this area, right? So what I'll do, I'll come by this area and this area. Okay, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कैलकुलेट करना है. हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब आपको पता ही होगा 0 से 0.78 तक जाएंगे एंड देन 0 से 1.86 तक जाएंगे. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग माय आंसर. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस पार्ट आंसर. ओके, इसका 0 से 0.78 तक का आंसर निकालेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 0.2823 एंड सेकेंड पार्ट में मेरा आंसर आ रहा है 0.4686. सो माई टोटल आंसर इज 0.7509. आपको पता है n गिवन है क्वेश्चन में, सो हमें नंबर भी निकालना है. लिख लेना पूरा बेटा. नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन 9 एंड 17 इज what is 0.7509 into how many total n is there, that is 120, right? So I'm multiplying with 120. So my answer is 90.108 and you know workers can't be in this form. So my value is 90 workers, right? So this is my answer. Okay, so these are the workers beta. But if you have to calculate the percentage, what you have to do, this is the percentage, this one. Okay, just multiply this with 100 and you will get the percentage. That would be 75.09%. Okay, when we have to find out the percentage, we just have to multiply it with 100. Now coming to the next question, that is this one, 2019 May, and this question is same as we have already done in 2013 April. Okay, this is the same question. That is again a 15 marks question. Very easy question. Okay, so please try to do each and every question. Try to repeat these questions again and again. Might be you will get the same question in your exam this time. Okay, now we are coming with 2020 May. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. 900 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था. सो n 900 है. मीन आपको दिया है, एवरेज मतलब मीन 50 दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन 20 दिया है और आपको तीन पार्ट दिए हैं 30 70 के बीच का, x1 x2. ठीक है, एक्सीड करना है 65 से, मोर देन वाला लेना है. 90 स्टूडेंट्स हैं तो परसेंटेज निकलेगा. लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. 2020 में, ओके, 2020 में, लेट मी कंप्लीट दिस एज सुन एज पॉसिबल. Let me conclude with the data.
I have given with n, that is 900, right? I have given with mean, that is 50. I have given with standard deviation, that is 20, right? Let me check. Mean 50, standard deviation 20. Yes. Okay. Let me calculate the first part. In first part, I am given with x1 and x2. x1 is 30 and x2 is 70, right? So I am making partition. So I am calculating z1. The formula is x1 minus mean upon standard deviation. Why I am writing this formula again and again? So that you would be able to learn these formulas, right? Look, बच्चे बिना formula के you can't do anything in exam. So formula is must. So now we got is minus 20 upon 20, that is minus 1. So my z1 is minus 1 and the another part z2 equals to 70 minus 50 upon 20, that is 20 upon 20, that is 1. Okay. So I can draw the diagram here. So I have two values. First one is minus 1 and second one is 1. So this is the required area. So I have to calculate this area. So what I'll do, I'll start from 0 to 1. I know the area value and after that I'll add with 0 to 1. The both are same now, obviously. So my required area is equal to, this one is 0. What was the area? 3413, no? Plus and again 0 to 1, 0.3413 and my total area is 0.6826. Because I have to calculate number, please write down whole gatha by your own. So number of workers or candidates? Number of students. So number of students, what you can say, securing between 30 and 70, you can write down the full one, okay? So my answer is 0.6826 because I have to multiply it with n, that is capital N, and I got 1614. That is my answer. This is the number of students, okay? Now I'm coming to the second part. In second part, I have to calculate exceeding 65. Exceeding 65. Okay. Let me do the second part. Exceeding 65. It means my x is 65. So I'm calculating my z. That is x minus mean upon standard deviation. Z equals to 65 minus 50 upon mean, standard deviation, sorry. So 15 upon z equals to 15 upon 20. Therefore, z equals to 0.75. I have to draw the diagram first. 0.75 because it is written in the question that I have to take exceeding 65. So means I want this answer. So इस आंसर के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, उसमें से ये वाला इधर वाला एरिया निकाल के माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. इधर का एरिया कैसे आएगा, 0.75 पे एरिया निकालना पड़ेगा आपको, कितना आता है. सो 0.75 पे हमारा एरिया आएगा. लेट मी राइट डाउन द रिक्वायर्ड एरिया. 0.5 में से माइनस करेंगे हम ये वाला एरिया. 0.75 पे पीछे चेक कर लीजिए. दिस इज 0.2734. So my answer is 0.2266 and number of students, please write down the whole wording by your own, okay. Number of students कितना होगा हमारा, 2266 into 900. So my answer is 203.94 and you know this can't be possible in numbers. So that is 204, okay. Now coming to the last part of this one, that is the third one. What is given, that is 90 स्टूडेंट. उन्होंने ऑलरेडी ना स्टूडेंट्स दिए, तो हमें पहले परसेंटेज निकालना होगा बेटा. 90 स्टूडेंट और टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 900. कैन आई से 10%, राइट. 90 स्टूडेंट्स बोले हैं, टोटल 900 है, 10% हो गया. 10% का मतलब क्या होता है, एरिया. तो उसको डायग्राम में चेक करो बेटा. 10% मतलब ये वाला 10%, राइट. 10% मतलब 0.10, राइट. अगर ये 0.10 है, टोटल 0.50 है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, 0.40, ठीक है ना. 0.50 में से ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो ये एरिया आ गया. ये एरिया आ गया 0.40. तो इस पर चेक करो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है. हमने पहले भी किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन. यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो जब आपने एरिया यहाँ पे चेक करना है तो आपकी z की वैल्यू आनी है 0.40 एरिया पे 1.29. सो दिस वैल्यू इज़ 1.29, ठीक है बेटा. अब हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला आंसर निकालना है. द वैल्यू ऑफ स्कोर एक्सीडेड बाय,
ओके, एक्सीडेड बाय का निकालना, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x निकाल देना है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए आपको x निकाल देना है। ये स्कोर था ना ये वाला 10%। हमने क्या किया, पहले 0.50 लिया, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, देन वी गॉट दिस पार्ट। ये पार्ट क्यों निकाला हमने, क्योंकि ये पार्ट से ही ये पॉइंट निकलेगा ना, इस एरिया से ये निकलेगा z। तो इस एरिया को हमने पीछे चार्ट में देखा बीच में, तो हमारा z आ गया 1.29 z आ गया। अब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। So 1.29 equals to, just give me 1 sec. Yeah. 1.29 equals to x हमें पता नहीं है बच्चे, मीन कितना है हमारा गिवन 50 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी 20। सॉल्व कर लीजिए इसको, x आपका आएगा 75.6। दिस इज आंसर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ DPT, लेट मी स्टार्ट। 2021 May, right? What the question is saying? मीन दिया, ओ माय गुडनेस, देखो 15 मार्क्स का ये आया, 15 मार्क्स का इससे ऊपर वाला आया और 5 मार्क्स का ये। जस्ट चेक आउट दिस क्वेश्चन। 2021 मई में लॉटरी लगी हुई थी, 15 मार्क्स का ये आया, ये भी बिल्कुल टाइम पास। 15 मार्क्स का पॉइजन का आया, 5 मार्क्स का बाइनोमियल का आया, तो कितना हो गया 35 मार्क्स का इसमें से। और अभी थ्योरी भी आई होगी इनकी, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दिस, सिर्फ 3 क्वेश्चन and you will pass. Not now I think pattern is changed, that's 40, right? But पिछले साल तो हो जाते ना 21 में, right? Okay, let me start with the question. Okay, let me show the question first. mean of a normal distribution is 20. मीन आपको 20 दिया बेटा, 9% दिया, 9% मतलब आपको एरिया दिया, 25 आपको दिया, एक्सीड अंडर ये सब x के लिए आते हैं, तो x आपको 25 दिया, SD निकालना आपने। ओके, लेट मी स्टार्ट। ये बहुत आसान है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, 15 नंबर फ्री के थे। सो लेट मी ड्रॉ। मीन हमें दिया है 20, राइट? उसके बाद हमें x दिया है 25। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट द शेडेड वन, दिस इज 0। और उन्होंने क्या कहा है, कितने परसेंट है, 9%। 9% एक्सीड वाला बोला है ना, वैल्यू एक्सीड 9%, तो ये वाला पार्ट मेरा 9% होगा, यानी 0.09 होगा। अगर ये पूरा पार्ट मेरा कितना है 0.50, तो उसमें से 0.09 माइनस करेंगे तो 0.41 आएगा। 0.41 पे चेक करो यहाँ पे कितना बन रहा है, दिस इज 1.34, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन बेटा। 0.41 पे 0.34 बनेगा, क्वेश्चन में गिवन है z। सो z इक्वल्स टू 1.34। ओके, हाउ आई कैलकुलेटेड z, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन एज वेल। ओके, सो 1.34 आ गया। Then we have to calculate z equals to x minus mean upon standard deviation. So my answer is 1.34 equals to x is 25 minus 20 upon standard deviation. So standard deviation equals to 5 upon 1.34. So my answer is 3.73. That's it. इतना सा क्वेश्चन करना है and you will get 15 marks. Okay. So we have completed DPT's question with this one. And thank you so much for watching the videos. So we have completed the first section. Okay, that is I think so section B, right? So in section C I would only do one chapter for you, and that is interpolation and extrapolation. That's my limits. I don't have enough time to make videos for others, so I'll just make videos for this chapter because I consider that chapter is one of the important one, and also the regression one. Regression is also one of the important chapter. But I think it might be difficult for each and every student to learn each and every formula of regression. There are 78 formulas in regression, but in your syllabus we only have 23 or approx 20. Yeah, that's approx 23 formulas, and you need to learn each and every formula where you have to apply those formula like that. This is 23 is not the exact limit, because there are some formulas which can be driven by another formula. So that's why I'm saying the totality is 23 approx. But it might be possible there are only I think 8 to 9 topics which you need to cover, right? And that's quite a lengthy one. That's why I'm not touching that chapter. That's too lengthy, and it will take around 7 to 8 lectures for the concept clarity. So we will start with interpolation and extrapolation, and soon we will try to upload the lectures so that you can get best knowledge from that. Okay, so thank you so much. Bye bye.